Myself M.P.Sidana. I am from Wisdom classes at Amritsar. Now vapor pressure of solution. Pressure of solution. Suppose A लिक्विड है और B लिक्विड है, तो इनको मिक्स कर दें. This will be solution. जनरली A को हम ले लेते हैं सॉल्वेंट, B को ले लेते हैं सॉल्यूट. आगे हम प्योर लिक्विड ले रहे थे. अभी तक हमने डिस्कस प्योर लिक्विड किया. अब हमने सॉल्यूशन का डिस्कस करना है. सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर होगा. Suppose we take liquid A. It has some vapor pressure. It has fixed value. लिक्विड की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता और शेप ऑफ वेसल पे भी नहीं करता और वॉल्यूम वेसल पे भी नहीं करता. ना शेप पे, ना वॉल्यूम पे, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे. इट इज लाइक ए कांस्टेंट. ये नॉट एक कांस्टेंट की तरह है. इट इज लाइक ए कांस्टेंट. सपोज वी पुट द अदर लिक्विड. Now this becomes solution. Now we will discuss first about A. अब ये solution हो गया. यहाँ पे वेपर A के वेपर, यहाँ पे वेपर ज्यादा बनेंगे, यहाँ पे कम वेपर बनेंगे. This is vapor pressure in pure state. Vapor pressure of A in solution. इनको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं. Pure is always greater. This is always smaller. Always smaller. तो PA is less than PA naught. इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? When we put some other liquid, the concentration decreases. When you put other liquid into the pure liquid, then concentration decreases. Means molality decreases. That is, mole fraction decreases. Write down. When we put other liquid to form the solution, then the vapor pressure of liquid decreases. Liquid A decreases. Liquid A decreases because concentration decreases. That is, molality decreases. Concentration decreases. That is, molality decreases. We can say mole fraction decreases. Mole fraction decreases. The vapor pressure decreases due to decrease in mole fraction. Vapor pressure decreases due to decrease in mole fraction. Mole fraction symbol is A. X is mole fraction.
मोल फ्रैक्शन लिक्विड बी, for its moles are Na, its moles are Nb. We will define mole fraction. Symbol is X. X है मोल फ्रैक्शनल कंपोनेंट है, XP मोल फ्रैक्शनल कंपोनेंट P, X is equal to Na over Na plus Nb. XP is equal to Nb over Na plus Nb. Na, Nb, both of components. Moles of components. Now mole is equal to weight over molecular weight. Na is equal to WA over MA. NB is equal to WB over MB. वेट मोलेक्युलर मास, वेट मोलेक्युलर मास. इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपने वेट को मोलेक्युलर मास से डिवाइड कर लेना, मोल आ जाएंगे, इसके मोल आ जाएंगे. फिर इसमें आप पुट कर लोगे तो सम इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन सम इज इक्वल टू 1. यदि आप एक सॉल्व करते तो दूसरे के सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, 1 में से माइनस कर दोगे, सेकंड वैल्यू आ जाएगी. यू हैव टू सॉल्व इन 1 नॉट द सेकंड वैल्यू. सपोज इन ए सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन A is 0.7, then mole fraction B is equal to 0.3. It means that 70% molecule A के होंगे, 30% molecule B के होंगे. तो सॉल्यूशन जो होगा उसमें A और B के मॉलिक्यूल होंगे, 70% मॉलिक्यूल इसके होंगे, 30% मॉलिक्यूल्स. तो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट दी, नोट डाउन, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट दी ratio of molecules. Mole fraction represents ratio of molecules in the solution. Ratio of molecule in the solution. मोल फ्रैक्शन मीनिंग आपको क्लियर हो गया. यदि एक ही मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्व कर लिया है, दूसरे को 1 में से माइनस कर लेना, दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, और ये रेशियो को रिप्रेजेंट करती है. इससे पहले हम ये कर रहे थे, आपको ये करवा रहे थे कि ए में जब लिक्विड ए होता है, जब प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड ए होगा, प्योर लिक्विड ए मीन्स इसकी मोल फ्रैक्शन 1 है.
100% A के मॉलिक्यूल। तो प्रेशर इज PA0। इसके ऊपर जो प्रेशर होगा PA0। When we put the other liquid to form the solution, now its mole fraction decreases. Here the mole fraction is less than 1. Mole fraction means concentration decreases. Moles per liter decreases. Therefore less vapors are formed. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम हो गया, या आप कह सकते हो मोलैरिटी कम हो गया, मोल्स पर लीटर कम हो गया। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन। तो इट इज गिवन बाय रॉल्ट्स लॉ। Vapor pressure of a component in the solution is directly proportional to mole fraction of component. Mole fraction of component. तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब इसमें इसको हम ये कह सकते हैं, वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। P is equal to P0 into X. P0 vapor pressure of pure liquid. Vapor pressure of pure liquid. Vapor pressure in solution. Now definition of Raoult's law. Definition of Raoult's law. Vapor pressure of a component in the solution is equal to vapor pressure of pure component multiplied by vapor pressure of that component multiplied by multiplied by vapor pressure multiplied by mole fraction of that component. Equal to vapor pressure of pure component multiplied by vapor pressure of mole fraction of that component in the solution. In the solution.
So this is finally Raoult's law. B is equal to P naught into X. It is Raoult's law. Now two types of solutions. Try one. Both solute and solvent form vapor. Solute, solvent, both have low boiling point. Both have low boiling point. Low boiling point means volatile. If boiling point low, only then vapor can be formed. Then type 2. Solvent is volatile. Solute is non-volatile. Non-volatile. Solvent has low boiling point, form vapor. Volatile is low boiling point. Solute is high boiling point. Does not form vapor. Now we will discuss first part, first type of solution. They both are forming the vapor. Second part is discussed in the part 3 of chapter. This will be discussed in part 3. Part 3 में डिस्कस होगा. ये पार्ट 1 सेकंड में डिस्कस कर रहे हैं. अभी हम जो पार्ट कर रहे हैं उस पार्ट सेकंड है. तो टाइप 1. Solute, solvent, both form vapor. Both form vapors. So this is liquid A. This vapor pressure. लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर P नॉट, तो लिक्विड B. B liquid, this will form vapor PB naught. Both will form vapor, but their vapor pressure will be not same. PA not equal to PB. Because depend on nature of liquid, depend on boiling point.
Then we mix the two liquid to form this solution. A liquid plus B liquid. Vapor pressure A and vapor pressure B. This is an equilibrium. This is also an equilibrium. Now, according to Raoult's law, its mole fraction is X. Its mole fraction is XP. This vapor pressure, listen on this one. PA की वैल्यू PA नॉट से लेस होगी. PA is less than PA नॉट. PB is less than PB नॉट. दोनों का प्योर से कम होगा. Then we apply. There are two gases together. दो gases एक ही वेसल में टुगेदर है, तो वी कैन अप्लाई डाल्टन लॉ. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. Dalton law of partial pressures. The total pressure of solution is equal to PA plus PB. Is equal to PB. Then PA is equal to PA naught into XA. PB is equal to PB naught into XB. Now putting the values here, so this is Raoult's law. Is only applicable when solution is ideal. Note down, ideal solution is that when no change in force or traction, when there is no change in force or traction on mixing solute and solvent. Mixing solute and solvent. Ideal solution will come in next video. नेक्स्ट वीडियो में आएगा जी आइडियल सॉल्यूशन. तो अभी आपने ये नहीं लेना कि जब इनको मिक्स करेंगे तो फोर्स और ट्रैक्शन में चेंज नहीं आनी चाहिए. व्हेन मिक्स ए एंड बी, इनके मिक्स होने पे फोर्स और ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, तब उसको हम आइडियल कहते हैं. तभी ये रॉल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होता है. रॉल्ट्स लॉ फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं कि मिक्स होने पे ट्रैक्शन में चेंज नहीं आनी चाहिए. So it will discuss in next video. तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन पुट करेंगे. आपको अभी बता दिया पहले, दोनों का सम 1 के बराबर है. एक की मोल फ्रैक्शन आपने निकाली है, दूसरे को 1 में से क्या कर लेना माइनस, फिर एक वेपोरेशन निकाल सकते ए और बी. इसके लिए आप सबसे पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल, जिससे टॉपिक क्लियर होगा. जिसमें हम ये रिलेशन लगाएंगे. राइट ऑन द न्यूमेरिकल. दिस इज सिंपल न्यूमेरिकल. 2 मोल of liquid A is mixed with
mixed with 3 moles of liquid B and form ideal solution. आइडियल अभी आप मीनिंग था कि जब मिक्स होने पे ट्रैक्शन में चेंज नहीं आनी चाहिए थी. ट्रैक्शन मस्ट रिमेन द सेम. The vapor pressure of pure A and B are pure A and pure B are and 60 millimeter. Calculate, please note down. Calculate the vapor pressure of solution. So this we solve like this. ए और बी दो लिक्विड है. इसके आपको 3 मोल दिया है, इसका आपको 2 मोल दिया है. फर्स्ट फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू Na ओवर Na प्लस Mb 2 over 2 plus 3, that is 2 by 6, 2 by 5, sorry, it is 0.4. So X is 0.4. So XB, NB over Na plus Nb. It is 3 over 2 plus 3. 3 by 5. It is 0.6. इसको अदरवाइज इसके सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. इसको हम इससे भी निकाल सकते थे. इससे भी सॉल्व कर सकते थे. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती. XB को 1 में से माइनस कर दो, उससे आ जाएगा. लेकिन X से आपका ठीक होना चाहिए 0.6. एक आप मोल फ्रैक्शन आती है तो सेकंड आप ऐसे कर सकते हो. फिर आप A का प्रेशर निकाल लें, B का प्रेशर निकाल लें. A के वेपर, B के वेपर. तो अप्लाइंग द रॉल्स लॉ, P is equal to PNR into XA. P naught is ये आपको गिवन था 80 into 0.4, it is 32 millimeter. मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, अंडरस्टूड है. PB is equal to PB naught into XB. So PB is equal to, this is given as 60, its value is 0.6, this is 36. इसके बाद आप दोनों को सम कर दो, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन आ जाएगा. PA plus PB, that is equal to 32 plus 36. This is 32, this is 36, 70, 68 millimeter. इसकी मोल फ्रैक्शन, इसकी 2 मोल थे तो इसे मोल फ्रैक्शन निकाल ली. इसकी मोल फ्रैक्शन मान में माइनस ही कर लेना है. इसको इसको हमने 0.4 से मल्टीप्लाई करना था. X is 0.4 है, 0.6, ये करेक्ट कर लो. इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है. इसको यहां भी करेक्ट कर लो.
This is explain this topic. Next, mole fraction of components in the vapor state. In vapor state, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे यहां पे ए लिक्विड है, बी लिक्विड है। लिक्विड स्टेट की इसके मोल एन बी थे, इसके मोल एन ए थे, इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स ए थी, इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी। नाउ ए विल फॉर्म द वेपर, ए का वेपर प्रेशर, बी का वेपर प्रेशर, तो ये वेपर स्टेट है, ये लिक्विड है। तो जैसे लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होती है, तो वेपर में इसके कुछ मॉलिक्यूल होंगे, कुछ मॉलिक्यूल इसके होंगे, इनकी तो मोल फ्रैक्शन होगी। इनकी भी तो मोल फ्रैक्शन होगी। ये सारा लिक्विड तो गैस बना नहीं, ओनली स्मॉल अमाउंट चेंज टू वेपर। कुछ ही लिक्विड के वेपर बने, इसमें भी कुछ लिक्विड के वेपर उसके बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उसके बाद एक इसमें आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में। तो सारा तो वेपर बने नहीं है, कुछ ही अमाउंट वेपर बनी है। तो वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन, तो वाई एन वाई बी मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। तो फिर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इनके मोल पता होना चाहिए। स्मॉल आर एन ए डैश, स्मॉल आर एन बी डैश। तो y इज इक्वल टू एन ए डैश ओवर एन ए डैश प्लस वाई बी इज इक्वल टू एन बी डैश ओवर एन ए डैश प्लस एन बी डैश। तो दीज आर मोल्स इन वेपर स्टेट। पेपर में डैश डाल रहा हूं, मोल्स इन वेपर स्टेट। कुछ ही लिक्विड गैस बनता है, सारा तो बनेगा नहीं। मोल इन वेपर स्टेट। But we cannot tell how many moles are there. Out of some moles, some are changed into vapor. Out of total moles, some are changed into vapor. कितने मोल वेपर बने हैं, कितने मोल इसके बने हैं, वी कांट टेल। इसकी को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। फिर ऊपर सारी गैस है, गैस मीन्स वेपर है, गैस मीन्स वेपर। उसमें हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब दोनों गैसेस एक ही वेसल में इकट्ठी पड़ी हैं। बोथ द गैसेस आर placed together in the same vessel. Both the gases are placed in the same vessel. Pressure is directly proportional to number of moles. Volume is same, temperature is same. जब गैसेस एक ही वेसल में टुगेदर हो तो उनका वॉल्यूम टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। प्रेशर मोल की डायरेक्टली है, तो हम ये कह सकते हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू एन ए डैश प्रोपोर्शनल टू एन बी डैश। दोनों गैसेस एक ही वेसल में होंगी तो वॉल्यूम टेम्परेचर सेम होंगे, फिर प्रेशर मोल की डायरेक्टली हो जाता है, तो यहां से इसके प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। फिर जो मोल फ्रैक्शन थी वही है, तो यहां पे हम पीए ले सकते हैं, पीए प्लस पीबी। So this can be written as
P over pressure of solution. Then YB is equal to PP over, we can put here pressure because pressure mole directly है. We can put because we want to take just only ratio. We want to take just ratio. It is mole fraction is the ratio. So we can put here pressure. PB is equal to pressure of solution. तो यहां से पी पुट करें तो प्रेशर सोल्यूशन पुट करें, पी पुट कर प्रेशर सोल्यूशन पुट कर दें. इसमें भी दोनों का समान के बराबर होगा. जैसे लिक्विड का वन होता है वेपर का भी वन होगा. तो YB is equal to 1 minus YB. You have to solve only one. Other you can one में से स्प्रेड कर लेना. Other can paint by specting. दूसरे को हम स्प्रेड करके ले सकते हैं. अब इसके न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल में आप ये फॉर्म ले रखेंगे. For numerical we can take P is equal to PA naught into XA, PB is equal to PB naught into XB, pressure solution A plus PB, मोल फ्रैक्शन दी वेपर स्टेट निकालनी हो तो जैसे हमने ऊपर ड्राइव किया है इसको अब इससे डिवाइड कर लो. ये लिक्विड की मोल फ्रैक्शन है, ये लिक्विड की है, वेपर की मोल फ्रैक्शन है. ये मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो इससे डिवाइड कर लो. तो न्यूमेरिकल का सिंबल एक्स से एक्स पी निकालो, आपको पहले करवा दिया हुआ है. एक प्रश्न निकालो, दूसरा प्रश्न निकालो. ये वैल्यू इससे कम होगी, इससे कम होगी, दोनों की वैल्यू इससे कम होगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम हो जाती है. ये भी पी ए नॉट से कम होगा, पीबी नॉट से कम होगा. दोनों को सम कर लो, वेपर मोल फ्रैक्शन. इसमें यही फॉर्म पे लगेगा. इसमें भी आपको एक सॉल्व करना है, दूसरे को वन में से माइनस ही करना है. उसके बाद है कि क्वेश्चन ये होता है कि लिक्विड की मोल फ्रैक्शन वेपर की इक्वल नहीं होती. मोल फ्रैक्शन एक्स है, ऊपर जो मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड वाई बी. वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, वाई बी इज नॉट इक्वल टू एक्स बी. This is also our objective. Mole fraction of input line है, mole fraction of vapor state are not equal to mole fraction of vapor state are not equal to mole fraction of liquid state. This is important result. तो इसका रिजल्ट को आप नोट करें. लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट.
liquids have different boiling point, therefore have different tendency to form the vapor. Therefore have different tendency to form the vapor. Different tendency to form the vapor. Y is not equal to XA, Y is not equal to XP. दोनों लिक्विड की वेपर बनाने की टेंडेंसी अलग अलग है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, दोनों अलग अलग टेंडेंसी होगी तो अलग अलग वेपर आएंगे, दोनों के वेपर बनाने की टेंडेंसी डिफरेंट होगी। तो इसके लिए एक रूल होता है which we call as Kono-Beloff rule। Kono-Beloff rule. Write down the definition. The liquid which have comparatively low boiling point. Liquid which has comparatively low boiling point. Low boiling point has more tendency to form the vapor. Has more tendency to form the vapor. Its mole fraction, the vapor state is greater. Its mole fraction, the vapor state is greater. As compared to mole fraction in the liquid state. Mole fraction in the liquid state. Liquid state. So suppose liquid A, its boiling point, suppose 90 degrees centigrade. Liquid B, जैसे हमने सपोज किया है, दिस इज टू बी सपोज्ड। अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज करें, सपोज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मोर वॉलेटाइल होगा। दिस मोर वॉलेटाइल, इससे ज्यादा ये ज्यादा वॉलेटाइल है, इसकी वेपर आने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो हम कहेंगे y इज ग्रेटर देन, यदि एग्जांपल को लेके चले y इज ग्रेटर देन x and yb is less than xb, सम तो 1 की इक्वल ही होगा। सपोज कर लो ये 0.7 है, this is 0.3, suppose this is 0.75, 0.25, तो जिसका वॉल्यूम पॉइंट कम होता है वेपर मानी टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसकी मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट। इसकी वेपर यहां पे ज्यादा होगी और इधर कम होगी। तो ये हमने एग्जांपल सपोज किया है। तो ओवरऑल रूल मीनिंग इज लिक्विड या मोल फ्रैक्शन वेपर इक्वल नहीं होते, दोनों डिफरेंट है। y इज नॉट इक्वल टू x, कंपटीशन का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। y इज नॉट इक्वल टू xp, तो दिस इज a क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस। y is greater than x है, y is less than xp, sum is equal to 1। यदि वो 0.7 है तो 0.3 है, ये हमने सपोज कर लिया। यदि 0.7 होगा तो 0.5 हो जाएगा। यदि ये एग्जांपल ऐसे सपोज करके चले, यदि मान लो इसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होता, सपोज कर लो कि इसका वॉल्यूम पॉइंट 150 होता, फिर ये इससे लेस हो जाएगा, ये इससे ज्यादा हो जाएगा, इसके लेस उससे ज्यादा।